गोल गोल फिरतो इथे. हो हो केलं. ओके चलो. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स. हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? वी आर डूइंग पार्टीशन वैल्यूज, दैट इज फ्रॉम पार्ट 2. पार्ट 2 का क्या कर रहे बेटा अपन? पार्टीशन वैल्यूज. और उसमें वी आर डूइंग, क्या कर रहे बेटा अपन? हम लोग कर रहे हैं द डेसाइल्स एंड द परसेंटाइल्स. ओके, नाउ डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के क्वेश्चंस अपन ने स्टार्ट किए थे एंड नाउ विल कंटिन्यू विद दैम. राइट बेटा? ओके, सो जस्ट स्टार्ट, just look here so that we can start. Okay, we'll start exercise number 1.2. Calculate D6 P85 for the following data. Right बेटा? We have to find D6 and P85. तो सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले अपने को करना है असेंडिंग ऑर्डर. क्या करना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर. राइट? ओके, सो लेट्स सी. Now we'll go for the असेंडिंग ऑर्डर. अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं? देखो बेटा, सबसे छोटा कौन है बेटा? वी कैन सी द स्मॉलेस्ट इज 36. 36 के बाद कौन आएगा बेटा? 38. तो 36 एंड 38 को अपन यहीं पर क्लिक कर देंगे बेटा. 36 एंड 38. उसके बाद आएगा द नेक्स्ट वन. तो पहले अपन 36 एंड 38 लिख के लेंगे बेटा. 36 38. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? 36 हो गया, 38 हो गया. अब कौन है बेटा? ओके, द नेक्स्ट वन इज 51. आगे का कौन सा है बेटा? 51. देन इट इज 63. हमें असेंडिंग में लगाना है बेटा. 63. उसके बाद कौन है? 63 हो गया. उसके बाद आएगा 64. देन 68. 64 एंड 68. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. आफ्टर 68 व्हाट वी गेट? After 68 we have 70, 72 and 79. 70, 72, 79 and 80. 80 how much? 82. Okay, 82. Now we will check अगर सारे रीडिंग्स लिए कि नहीं अपन ने. 6 and 4 there are 10 रीडिंग्स. कितना है बेटा? there are 10 रीडिंग्स. यहाँ पर देखो बेटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब दैट इज ओके. हमने पहले स्टेप कर दिए बेटा टू फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ आफ्टर द असेंडिंग ऑर्डर द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज टू सी कि हमें फाइंड क्या करना है. वी हैव टू फाइंड D6 एंड P85. D6 एंड P85. तो पहले D6 करेंगे बेटा. फॉर्मूला क्या है बेटा? PI इज इक्वल टू IN+1/4. ओके, नाउ व्हाट इज I? We have to find the sixth decile. This is not P, this is D. We have to find the sixth decile, matlab D6. 6. How much is N? There are total N readings, 10 readings, matlab N is 10. 10 plus 1/4. कितना आता है बेटा ये? 6 into 11/4 मतलब 66/4. 4 1 26 मतलब कितना? 6. 16.5. सो D6 कौन सा है बेटा? 16.5th ऑब्जर्वेशन. पहला काम अपना है कौन सा ऑब्जर्वेशन था? सो वी गेट दैट द D6 इज कौन सा? 16.5th ऑब्जर्वेशन. ओके, एक बार ये हो गया बेटा. इसके बाद अपने को चेक करना है कि 16.5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है. तो विच इज द इंटीजर पार्ट, दैट इज द 16th ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट कौन सा है बेटा? डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट इज 0.5 इंटू 16 के आगे वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है बेटा? 17th ऑब्जर्वेशन माइनस द 16th ऑब्जर्वेशन. अब ओके, नाउ
which is the 16th observation. Now one thing is here, D जो है बेटा यहाँ पर, because it is D, we should divide it by 10, not the quartiles. We should divide it by 10. It must be 6.6th observation. Correct ना बेटा? 6.6th observation. I'm sorry for that. कौन सा है बेटा? 6.6th observation. तो फिर अभी ये क्या आएगा? It will be 6th observation plus 0.6 into 6 के आगे कौन सा आएगा बेटा? 7th observation minus the 6th observation. Correct? So which is the 6th observation? 1 2 3 4 5 6. It is 68. 6th observation is 68 and then followed by 70. तो देखो बेटा ये 68 plus 0.6, 7th observation 70 minus the 6th observation which is 68. Correct? So what we get? We get 68 plus 0.6 into 2. 68 plus 1.2. 69.2 will be our 6th decile. D6 will be 69.2. इतना आसान है बेटा. Now once again I'll have to welcome you all to this lecture. आज अपन ने बिना वेलकम किए ही किया बेटा. So welcome all to this lecture. Good morning to you all. Very very good morning. अब देखो बेटा एक बार वापस ये देखो हमने D6 लेने के लिए क्या किया है. सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दिए बेटा हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. ओके बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. अगर ये सही है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ है बेटा? हमने देखा है कि n was 10 and we had to find D6. तो हमने क्या किया बेटा? DI वाला फॉर्मूला अपन ने यूज किया है. DI, व्हाट इज DI? फॉर्मूला क्या है? I into n plus 1 upon 10. डेसाइल्स फाइंड करना है बेटा. डेसाइल्स के लिए डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल के लिए डिवाइड बाय 100 एंड क्वार्टाइल्स के लिए डिवाइड बाय 4. ये चीज याद रखो बेटा, जो मिस्टेक हुआ है वी शुड नॉट मेक इट अगेन. ओके बेटा. ओके नेक्स्ट, आई के जगह कितना बेटा? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सिक्स्थ वन. D6 इज इक्वल टू 6. 10 plus 1 upon 10 मतलब कितना आएगा बेटा? 6 into 11 upon 10 मतलब 66 upon 10. that is the 6.6th observation will be our decile. Okay, 6.6 observation will be our decile. तो फिर अभी कैसे फाइंड करते बेटा अपन 6.6? जो इंटीजर पार्ट है, विच इज द इंटीजर पार्ट? 6. 6th observation plus 0.6 into 7th observation minus the 6th observation. Correct? तो 6th observation कितना आएगा बेटा? 68. 6th observation is 68 plus 0.6 into 6 के आगे का that is the 7th observation. 7th observation कौन सा है बेटा? 70. 70 minus 68. तो कितना आएगा? 68 plus 0.6 into 2, 1.2 होगा and we get 69.2 as the 6th decile. I hope it is clear. अगर नहीं है तो you can ask. बिना डरे पूछना है बेटा. The next one we have to find P85. Now what is this P85? बिकॉज अपने को परसेंटाइल फाइंड करना है तो पहले तो अपने को परसेंटाइल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. I इंटू n प्लस 1 अपॉन 100 बेटा इस बार, बिकॉज हमें परसेंटाइल करना है. राइट? ओके, तो कितना आएगा? I इज 85. I कितना है बेटा? 85. n प्लस 1 मतलब n इज 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100. तो दिस विल बी 85 इंटू 11 अपॉन 100. अपन कैलकुलेटर से पूछेंगे बेटा 85 इंटू 11 कितना है? आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन 935 अपॉन 100 मतलब कितना आएगा बेटा? 9.35th ऑब्जर्वेशन. P85 कितना आएगा? 9.35th ऑब्जर्वेशन. If there is any doubt, you can ask me again without any fear, without any problem. Okay beta, so P85 will be what beta? Which is the integer part? The integer part is 9 मतलब 9th observation plus 0.35 into, अब क्या है बेटा? 9th के आगे का कौन सा है? 10th observation minus the 9th observation. 9th observation कितना है? 9th observation is 79 and the 10th is 82. तो we'll substitute it. 79 plus 0.35 into 82 minus 79 because the 10th observation is 82.
So this will be 79 plus 0.35 into 3. 82 minus 79, 3 आता है बेटा शायद. Okay, so this is 79 plus how much? 1.05, right? So it comes out to be 80.5. P85 will be 80.5. Now what you have to do is you have to write both the answers at the end of the problem. So अपन ने पहले D6 find किया है, which was D6 was how much? 69.2, and P85 how much? It is 80.5. So these are the two things which he had asked and we have found out, right? Okay, so let's go to the next one. Once again I repeat, if you have any damn issue you can ask me immediately. The next one, the daily wages of 15 laborers are as follows. अब उसने daily wages दिए हैं and we have to find D8 and P90. उसी की जैसे सॉल्व करना है बेटा, कोई अलग चीज नहीं है. First of all, you'll have to do it in the ascending order. Arrange in the ascending order. Now, which is the smallest observation? 180 we can see is the smallest observation, followed by 200 and 210. Already he has said that there are 15 labors, so हमें count करने में आसानी होगी. 180, 200 and 210. पहले तीन. Second one, 180, 200 and 210. Okay, so these are the first three. Next कौन से है देखो बेटा. The next one, after 210 we have 225, 230 and 250, right? 225, 230 and 250. Okay, the next one, after 250, which is the bigger one? 250 से जो बड़ा है, एक बार वापस 250 आ गया है, then directly we have 300. 250 and 300, right? 250 दो बार है, 300, right? What about the next one? After 300 we have directly 350, कितने बार? दो बार. 350, उसके बाद 375 भी दो बार है. 350 twice and 375 again twice. Okay, the next reading after this 375 which has come twice is 380, 400 and 450. 380, 400 and 450. देखो बेटा, इस तरह से अपन ने ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं बेटा, right? Now we have to find the two things which he has asked, which is how much? D8 and P90. D8 and P90. We have to find D8 and P90. We have to repeat the same steps which we had seen before. तो कैसे आएगा D8? We know that DI is equal to I into n plus 1 upon how much? D है. If it is D, we have to divide it by 10. So we get what? D. Which one we have to find? 8. D8 is 8. N कितना है? N is 15, not 10. N is 15 this time. 15 plus 1 दिया है ना उसने, या फिर अपन यहाँ पर भी काउंट कर सकते हैं. 5 3 are 15 upon 10. मतलब देखो 8 into 16 upon 10. Now 16 8 are how much it is? 80 and 48. That is 128 upon how much? 10. So D8 is 12.8 observation. 12.8 observation. Now how do we find this 12.8 observation? So D8 will be 12th observation plus 0.8 into 12 के आगे कौन सा है? 13th observation minus the 12th observation. Correct? 13 minus 12. Okay. Now which is the 12th observation? Which is the 12th observation here? First of all, we'll have to find it. ये 5, ये 10, 11, 12. This is the 12th and this is the 13th. 375 and 380. 375 plus 0.8 into 13th observation is 380 minus 12th observation already हमने देखा है, that is 375. Okay, so this will be 375 plus 0.8 into 5. ये कितना आएगा?
375 plus 4, which will give you what? 379. D8 will be 379. Correct? Okay. Now we needed the 13th and the 12th observation. There go. This is the 12th and the 13th. These are the 14th and the 15th observation. Correct? The same thing which we have done in the first one. Let's carry on for the next one. Next he wants P90. So we'll write down the formula for Pi. It is I n plus 1, all same, except we'll divide it by 100 because हमें percentile find करना है. So this will be P. How much we have to find? P which one? 90. तो I के जगह आएगा 90, n plus 1 मतलब 15 plus 1 upon 100. Zeros will get cancelled. It will be 9 into 16 divided by 10. We know that 16 nines are 144 आता है, if I am not wrong. 144 upon 10, which is how much? 14.4th observation. Which one? 14.4th observation. So what we get? P90 is equal to what? Which is the integer part? The 14th observation plus 0.4, the decimal part, into 14 के आगे 15th observation minus the 14th observation. What is the 14th and which is the 15th observation? We will find it out. 400 and 450. It is 400. 14th observation is 400 and the 15th observation is 450. Correct? Yes, it is 450. 0.4 into 450 minus 400. Correct? So this will become 400 plus 0.4 into 50. 400 plus how much this is? 5 4s are 20. So it comes out to be your favorite number 420. कितना आ रहा है बेटा? 420. So we have found out both D, which one? D8 as 379 and P90 as 420. देखो बेटा हर बार मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ये फाइनल आंसर आपने कंपलसरी लिखना है इन द पेपर. 11th 12th अच्छी तरह से समझ लो बेटा, फाइनल आंसर लास्ट में लिखना ही लिखना है, कंपलसरी. ओके, द नेक्स्ट वन. नाउ विच इज द नेक्स्ट वन? We move on to the next question, that is the third one. Now what he has asked in the third one, calculate the second decile and the 65th percentile for the following. Now we can see that this is the grouped data. This is the grouped data. तो फिर अपने को ग्रुप में ही लिखना पड़ेगा. How many observations are there? देखो बेटा 80, 100, 120, 145, 200, 280, 310, 380, 400 and 410. First of all we have to check whether the x values are in the ascending order. उसने दिया है 81, they are in the ascending order. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. We need 11 blocks. हम लोग क्या करेंगे? We will make a table. We will make a table. नो क्यों नहीं ले रहा है? चलो ठीक है, अपन अपना लिखेंगे यहाँ x and the f. ओके 80 80 100 120 80 100 and 120. Just 1 minute, the battery is running low. Then 145, 200, 280.
and 280. Okay, after that अब वो टेबल बता रहा है 310, 380, 400. And finally 410. Okay, then the frequencies starting from 15, 18, 25, 27. Okay, after that 40, 25, 19. Okay, after that 16, 8 and 7. Now these are the frequencies. Now if we have to find the partition value, whichever it is, whether it is median, whether it is deciles, percentile or even the quartile, for that हमें क्या करना है, we'll have to find the cumulative frequency. सबसे पहले क्या find करना पड़ेगा अपने को, the cumulative frequency, and we'll start with 15 and then we go on adding 15 plus 18 we get 33, add 25 to it we get 48, add 27 to it we get 75, add 40 to it 115, add 25 to it 140, 159, 175, add 8 to it 183 and 190. So the total comes out to be 190. Okay, so this is the cumulative frequency. What is n now? N is 190. This is the last term, which is your n, correct? Okay, so now what he has asked us to find, he has asked us to find the second decile and the 65th percentile. He has asked us to find D2 and P65, right? So first of all we'll find D2. What is the formula for di? It is I n plus 1 upon 4. What is your I? I is 2, D2. 2 into n is 190 plus 1 upon, again decile के लिए I am writing 4, आदत से मजबूर, we'll have to divide it by 10. Okay, 2 into 191 upon 10. So D2 will be 382 upon 10, मतलब 38.2th observation, 38.2th observation. तो कितना आएगा? This will be, now the 38.2 will lie between 33 and 48. Between 33 and 48. Now which is the observation we want? The 38.2 observation. So all these observations are what? They are 145. How much? It is 145. So we can say the D2 is 145. Now some of the teachers what they do, ये उसी तरह से फाइंड करेंगे, मतलब D2 will be the 38th observation plus 0.2 into the next one 39 minus 38. It is 148 plus 0.2, which is the 39. It is again 145 और ये भी कितना आएगा? 145. Both 39 and 30th observation are same. तो ये 0 आएगा. It will be how much? It will be 145. यहाँ पर गलती से अपन ने 148 लिखा है. It will be 145. Correct? It is 145. Correct? तो ये नहीं किया तो भी चलेगा अपने को. This step is not necessary. यहाँ से directly अपने को आंसर मिल सकता है. Okay? Now the next one, to find P65. For that we write down the formula for Pi. It is I n plus 1 and divided by what? 100. I 65 n plus 1. How many observations are there? 190 plus 1 divided by 100. So this will be 65 into 191 upon 100. Okay, you have to do the calculations. Calculator use नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो. Okay, I am just doing it to save our time. सेव करने के बजाय ज़्यादा टाइम लग रहा है बेटा इधर. 12415 अपॉन 100, मतलब it will be
124.15 ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू, अभी ये कौन सा आएगा देखो यहाँ पर 124.15, इट विल लाई बिटवीन 115 एंड 140, बराबर है ना बेटा। ये कहाँ पर ढूंढेंगे अपन, वी विल फाइंड दैट इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इट इज 280, हाउ मच 280, so your P65 will be 280, and the next thing which we have found out was D2, which was 145. Okay, this is as simple as this one, right? Let's move forward. Okay, do comment beta, do comment. Now the fourth one, from the following observations calculate the rent of the 15th, 65th and the 91st house. अब 15, 65 और 91 निकालना है, मतलब we will have to use the percentile. हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, परसेंटाइल ही यूज करना पड़ेगा. We cannot use the decile or the quartile. We have to use the percentile, क्योंकि decile सिर्फ 10 होते हैं, right? And quartile सिर्फ 4 होते हैं. We need the 15, 65 and 91. ये सब किस में आएंगे, only in the percentile. So हम लोग percentile में चेक करेंगे इसको. First of all, we'll write down the observations. 11,000, 12,000 up to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, so your x or the wages will be 11,000 in thousands, ऐसा लिखेंगे, so that we don't need to write 12, 13, 14, 15 up to 18, and then the frequencies. Now what are the frequencies which he has given? 25, 17, 13. 25, 17, 13, right? Next one, 14, 15, 8, 6, 2. Okay, so these are the frequencies, and what we have to find, 15, 65 and 91, P15, P65 and P91. So for that, what we do, we first find out the cumulative frequency. What will be the cumulative frequency? Pehle 25 as it is, add 17 to it to get 42, add 13 to get 55, add 14 to give 69, add 15 to give 74, add 8 to give 82, 88 and 90. So what is your n? N is 90. N is 90. Now we have to find P15. What is the formula for Pi? It is I n plus 1 upon 4. 15, 90 plus 1 upon Pa beta. It should be 100. ये कितना आएगा? 15 into 91 upon 100. How much it will be? 91 into 15. It is 1365. Okay, and divide by 100. It will be 13.65th observation. 13.65th observation. 6th observation beta. Okay, so 13.65 observation कहाँ रहेगा बेटा? The first 25 observations are here in the very first row. तो कितना आएगा? It will be 11. So our P15 will be 11. P15 will be 11. Now we move on to P65. 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 It will be, I will be 65 into 91 upon 100. डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ये जो पार्ट है ये तो पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा. n plus 1 upon 100, that will be same for everyone. It will be how much? 65 into 91. It is 5915 upon 100. That is 59.15th observation. Okay, P65 will be 59.15th observation. Where will it lie? It will lie between 55 to 69. उसके बीच में आएगा कि नहीं बेटा? ये 59 किस में आएगा? After 55 but before 69. तो कितना आएगा? It will be how much? The fourth one, that is 14. How much it is?
it is 14. P65 will be 14. And finally we need P, how much? 91. So this will be 91 into, yes, n plus 1, again 91 upon 100. So it is square of 91, that is 8281 divided by 100. P91 will be 82.81 observation, which is 82.81. It will lie after 82. After 82, and it will be in this one. That means it will be 17. It is 17. So first of all, अपने को चाहिए P15, that is 11. But we know that it is in thousands of rupees. P65 is 14,000, and P91, that is rupees 17,000. So these are the three percentile which he had asked. Okay, यहाँ पर देखो बेटा, what was the question? We have to find the rent. So the rent of the 15th house was how much? It was 11,000. The 65th house was 14,000, and the 95th was 17,000. Okay, okay. Let's move on to the next one. The following frequency distribution shows the weight of the students in a class: 40, 45, 50, 55, 60 and 65. And we have to find the percentage of student whose weight is more than 50 kg. We have to find the number of students whose weight is more than 50 kg. So let us find out. Let us check the table. कहाँ किया है पता नहीं, नहीं आ रहा है वो. चलो ठीक है, हम लोग लिख के लेंगे बेटा. 40 to 65, 40, 45, 50, 55, 60 and 65. Okay, now what is the next one? He has given the number of students, that is the frequency: 15, 40, 29. This is your X and this is your F. Okay, after that 21, 10 and 5 and 5. Okay, first of all we'll find out the cumulative frequency. How much it is? 15, 55, 84, 105, 115 and 120. So your N is 120. Now he has said how many students have the weight more than 50. Weight more than 50 kg. How much? ये देखो बेटा, all these weights are more than 50. So it will be 84 plus sorry, इन सब की एडिशन आएगी, या तो फिर कितना आएगा बेटा? 60 आर लेस देन 50. Therefore 120 में से 60 या 70 हम लोग माइनस करेंगे. ओके, ये जो 70 है वो हम लोग सीधा सीधा माइनस करेंगे. करेक्ट? ओके, सो वी विल फाइंड वेट लेस देन 50. कितना आएगा लेस देन 50? 15 and 45, that is 55 students. ओके, देन मोर देन कितना आएगा? मोर देन 150, more than 50 kg. It will be how much? Total student, that is 120 minus 55. अब देखो बेटा, कुल मिला के 120 बच्चे हैं. 55 का जो वेट है इट इज बिलो 50. सो बाकी के जो बचे दैट विल बी अबव 50. मतलब इट विल बी 65 students will have weight more than 50 kg, right? Okay, let's move on to the next one. If the weight column provided is of the mid values, weight column जो है ये mid value है, then find the percentage of student whose weight is more than 50 kg. Now this is the, ये बोला है उसने, the weight column provided is of the mid values. ये सारे mid values है. मतलब कैसे रहेगा mid values? मतलब अगर ये 40 दिया है
तो 40 इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड होगा बेटा? इट विल बी 35 से लेके 45। क्यों? डिफरेंस 5 का है, सॉरी डिफरेंस 5 का है, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करना है। 2.5 ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इट विल बी 37.5 से लेके 42.5। ये 42.5 से लेके कितना? 47.5। ये आएगा 47.5 से लेके 52.5। क्या किया है बेटा अपन ने? इन दोनों का जो डिफरेंस है 5, उसको 2 से डिवाइड किया है, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट किया, 40 माइनस 2.5 विकेट 37.5, और एक बार अपन ने ऐड किया है। सेम थिंग यहाँ पर भी कर रहे हैं अपन। 52.5 से लेके 57.5, ये आएगा 57.5 से लेके 62.5, एंड फाइनली 62.5 से लेके 67.5। दीज आर द मिड वैल्यूज। नाउ ये सेड कि कितना है 50 से ज्यादा, कितना है 50 से ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द पी नंबर। पी आई अपने को फाइंड करना है, विच इज आई n + 1 अपॉन 100। अब आई मतलब कितना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही अपने को फाइंड करना है। लेकिन कितना है? पी आई की वैल्यू अपने को पता है, कितनी? 50। आई हमें पता नहीं है, n + 1, n पता है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 120 अपॉन प्लस 1 रह गया ना बेटा, अपॉन 100 अपॉन 100। तो 50 इज इक्वल टू आई इंटू 121 अपॉन 100। सो व्हाट विल बी आई? आई विल बी 50 इंटू 100 अपॉन 121, मतलब कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 121। इट विल बी 41.32 स्टूडेंट्स। अब डेसिमल में तो स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो आई इज अप्रोक्सीमेटली 41.32 भी लेंगे, बिकॉज वी नीड इन परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना आएगा? 41.32 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इट विल बी इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, 49.6%. So 49.6% students will have the weight more than 50. It is less than 50, I'm sorry. More than के लिए क्या करेंगे? 100 में से इसको माइनस करेंगे। उसने पूछा है more than के less than, more than 50 kgs बेटा, तो ये less than 50 है। So number percentage of student having weight more than 50 kgs कितना आएगा? 100 minus 49.6, which is 50.4%, which is very near to that 50%। लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा बेटा, क्योंकि इसने मिड वैल्यू दिया है, मतलब we need the exact value, correct? Okay, so with that this problem is also complete. Now let's move on to the sixth one. Calculate D4 and P48 from the following data. Mid value दिया है and the frequency दिया है. We want D4 and P48. Now this is the mid value. So first of all we'll have to convert this into class. इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Now what is the difference? क्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले अपन लिख के लेंगे. चलो 2.5 से लेके 22.5, 2.5, 7.5, 12.5. Okay, 17.5 and 22.5. This is your mid value x, and the frequencies are given as 7, 18, 25. 7, 18, 25, 30 and 20. And the total is 100. Total भी दिया है बेटा उसने. That is 100. Okay, what we will do? We will find the cumulative frequency. सबसे पहले now cumulative frequency के पहले अपने को class बनाने हैं. We'll have to make the classes. तो class में कैसे आएगा? What is the difference? 2.5 और 7.5. Difference कितना है? 5 है. Okay, 5 का difference है. तो क्या करेंगे अपन? इसको divide by 2 करेंगे. That is 2.5. 2.5 एक बार subtract करेंगे और एक बार ऐड करेंगे, मतलब योर क्लास विल बी,
पहले तो अपन 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 0, 2.5 माइनस 2.5 कितना आएगा 0, एंड इफ वी ऐड ये आएगा 5, ये कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.5 माइनस 2.5 इज 5, ऐड करेंगे तो 10, 10 से लेके 15 तक, पहले 2 किए बहुत हो गए बेटा, अभी 5 का डिफरेंस पता है, यहाँ पर क्या है 15 से लेके 20 एंड 20 से लेके 25, तो ये सिर्फ बताना है कि 2.5 कैसे आया है, देन वी कैन जस्ट गो ऑन. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू विच वी हैड आस्क्ड. तो सबसे पहले तो अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, दैट इज 7, 25, 50, 80 एंड 100. ये 100 और ये 100 हमेशा इक्वल ही आना चाहिए, करेक्ट. नाउ व्हाट ही हैज आस्क्ड अस टू फाइंड, he has asked us to find D4 and P48. To find D4, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए फॉर्मूला DI का, DI इज इक्वल टू L प्लस यस H अपॉन F, है ना, ओके, N बाय 4, D है ना, मतलब N बाय 10 माइनस CF, करेक्ट. फॉर्मूला ऑलरेडी अपने को पता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड D4, मतलब I की वैल्यू 4 आएगी, तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड IN बाय 10, I is 4, N is 100 अपॉन 10, इट विल बी 40th ऑब्जर्वेशन. अब 40th ऑब्जर्वेशन कहाँ रहेगा बेटा, विल हैव टू फाइंड आउट इन द CF, 25 से लेके 50 तक, करेक्ट. 25 से लेके 50 तक जो बड़ा है दैट विल बी योर D4 क्लास, करेक्ट. नाउ वंस यू फाइंड द D4 क्लास, आपका काम क्या है, ये जो है दिस इज योर D4 क्लास, जानबूझ के मैंने कलर चेंज किया है, दिस इज योर D4 क्लास. ये क्या रहेगा, दिस विल बी योर L, द लोअर क्लास बाउंड्री विल बी योर L, उसी की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी योर F, और उसके पहले की प्रीसीडिंग जो है दैट विल बी योर CF, ओके. ये सारी चीजें मिली है और अपने को H भी पता है, H कितना है 15 माइनस 10 इज 5, ओके. सो D4 विल बी L, L इज हाउ मच, वी हैव ऑलरेडी फाउंड 10, H 5, F is 25, F is 25 and IN upon 10, that is 40, हमने निकाले ना, IN upon 10 that is 40, minus the CF is also 25, this will be 10 plus, you can divide this 1 by 5 into 15, so D4 will be how much, 13, okay. D4 will be 13. Now let's move to the next thing which he has asked, P48. You have to find P48. P48 सबसे पहले क्या करेंगे अपन, yes, I into N upon 100, I कितना है 48, N 100 upon 100, so it is the 48th observation. कितना है 48th observation. So 48th observation कहाँ रहेगा बेटा, it will be again between 25 to 50, उसी में रहेगा बेटा, उसी में रहेगा 25 to 50 में. तो अगेन ये जो D4 क्लास है that will be also the P48 क्लास, सारे वही आएंगे बेटा. So P48 will be L, L तो 10 है, अभी अभी अपन ने देखा है, सेम क्लास है, प्लस H upon F 5, F 25, this is 48 minus IN by 4 कितना था बेटा 40, it is 40 minus 25, 40 minus 25, okay. ये सारा वही रहेगा बिकॉज वही क्लास है बेटा, द सेम क्लास. CF विल बी दिस मच, ओके, F विल बी दिस मच एंड ये भी इतना ही आएगा, करेक्ट, ओके. यहाँ पर 48 आएगा, सो दिस विल बी 5,
10 प्लस ये कितना बेटा 23/5 विच इज 4.6 14.6. D45 will be 14.6. okay, and D4 कितना था, D4 was 13. एकदम नजदीक आएगा बेटा, बिकॉज अपने को पता है D4 will be near about P40. D4 will be near about P40. So both the values should be almost equal. Okay beta. Okay, now we come to the next one, D9 and P20, which no, there are some more 7th 8th है, तो बाकी के अपन देखेंगे in the next lecture, that is tomorrow. Okay, आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा. Have a nice day. Enjoy yourself. Bye.